Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning. Thank you, Ravi. Thank you, Himanshu. Hello and welcome to ADA 24/7. As you all know, I am Professor Abhishek Tripathi, teaching live for ADA 24/7. पिलामने आज गोटे इंटरेस्टिंग इंटरैक्टिव इनफॉर्मेटिव न्यूज सेशन को तम को वेलकम करूचे जबरदस्त सेशन रहिबो नो डाउट अबाउट इट देखिबा कोन कोन हेडलाइंस तैयारी करूचे व्हाट आर द थिंग्स दैट आर क्रिएटिंग द हेडलाइंस सूरत कोर्ट रिजेक्ट करिछि राहुल गांधी का प्ली राहुल गांधी अपील करिवे हाई कोर्ट रे मिलिटेंट अटैक रे पुंछ सेक्टर रे 5 जन सोल्जर्स कर डेथ होइछि क्विकली पिला माने आसीबा lot is happening ame track karuche the same sex marriage case editorial re deini aji I was just glancing through before your class but there is an excellent article on the same on page number 14 of today's Hindu. Supreme Court's ruling of 2018 was a rainbow of hope by Krishnadas Rajgopal. ये आर्टिकल टाको पिला माने देखिबा काली सुप्रीम कोर्ट कोन कहिसंती इन शॉर्ट जदि मु तुमको कहबी थर्ड डे ऑफ हियरिंग one of the few cases जोटी लाइव तमे देखि परिबो सुप्रीम कोर्ट रो प्रोसीडिंग्स गुडा को लाइव देखि परिबो इट इज टेलीकास्टेड लाइव सो देयरफॉर अगेन वेरी इंपोर्टेंट कि हमें आको ट्रैक करिबा नॉट ओनली landmark decision about whatever the decision may be second amaro OPSC UPSC सब point of view रे high court ASO OJS exams reading comprehension close test filler सब case रू एटा important तो ए case टा को हमें track करूचे first मु तुमको काली रो developments कहि दउचे ए case रे it may be some months from now ki judgment asiba but at the same point of time Supreme Court re kali DY Chandrachud CGI DI Chandrachud au Mr. Bhatt they strongly argued against the government not only argued they bluntly put it in the right perspective Abhishek Manu Singh bhi was the learned counsel in support of the petitioners. He also put up a brave and interesting point of view, perspective, new perspective. देखिए दबा कौन हैला काली सुप्रीम कोर्ट रे लाइव टेलीकास्ट होउची पिला माने तो you can also see those clips. सुप्रीम कोर्ट रे काली जस्टिस चंद्रचूड़ कहले कि 69 years परे आमर लॉ इवॉल्व काई की करि पारुनी जेतबेले 1954 रे स्पेशल मैरिज एक्ट तयारी हेतिला डेफिनेटली सेटा एथि पई तयारी हेतिला कि से माने पर्सनल लॉज रो एम्बिट रे आसीबे नाही आसी पारु नांती तांको पर्सनल लॉ it is telecast live yes तो पर्सनल लॉ तांको
अफेक्ट करूनी पर्सनल लॉ रो एम्बिट भितर से आसु नाहंती एग्जैक्टली व्हाई स्पेशल मैरिज एक्ट फॉर्म होइतिला तापरे 69 इयर्स हेई सालानी लॉ काई की इवॉल्व करूनी इज मैरिज मैरिज रे बाइनरी पार्टनर्स बा बाइनरी कॉन्स्ट्रेंट्स दरकार की बाइनरी कॉन्स्ट्रेंट्स माने जणे मेल हेइतिबो जणे फीमेल हेइतिबो सेटा दरकार की ना मैरिज इज मोर अबाउट इमोशनल स्टेबिलिटी देन procreating. Procreation is only a part of marriage. At least the language that the Supreme Court is speaking, already तुमको कही जदि इंडिया एक्सेप्ट करुची इंडिया 35th कंट्री अब जे एक्सेप्ट करिबो नंबर 1 नंबर 2 होचे at least the language that the Supreme Court is speaking is a progressive language. Law ebe may be amendable but maybe तांको legitimacy मिलिबो may be मिलिबोनी. We can only know when the final judgment comes, which may take some months, but at least the direction and the language are progressive and encouraging. तो पिला माने ए point of view रो आमे नबा. By decriminalizing homosexuality, the court says it contemplated that stable marriage-like relationship. एटा बहुत इंपोर्टेंट ए वर्डटा ही बहुत इंपोर्टेंट. सुप्रीम कोर्ट काले कहला बाय डिक्रिमिनलाइज करिकी आमे स्टेबल मैरिज लाइक रिलेशनशिप माने नॉट मैरिज एटा लाइक वर्डटा ऊपर फोकस करिवो. मैरिज भलिया रिलेशनशिप एग्जिस्ट करि पारिबो. इट इज नॉट ओनली अबाउट मैरिज could exist between same sex person who do not treat their bond as chance encounters. जो माने ट्रीट करू नांती तांकर chance encounters भलिया तांको बॉन्डिंग चांस नुए. That for them is not just a physical relationship but something like a stable emotional relationship. जोटा मु तुमको कहउतली तो सेति पई एटा गोटे stable emotional relationship rather than it is a physical relationship. देखिबा काली कोन हैला CJI by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud on Thursday माने काली said the moment the Supreme Court gave a rainbow of hope to the LGBTQIA plus lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersexual, asexual and others, gave a rainbow of hope to the community by decriminalizing homosexuality in 2018. It had implicitly contemplated that stable marriage-like relationship could exist between same-sex persons who do not treat their bond as chance encounters. से कहले जेतबळे आमे डिक्रिमिनलाइज कले आमे सेतबळे ए जिंस को ओबियसली आमे जानितिले कि मैरिज लाइक रिलेशनशिप एही पारिबो. ए माने चांस एनकाउंटर नुए. चांस एनकाउंटर माने बुझ परछो तो आमना सामना से को जदी चांस एनकाउंटर नुए एमतिया नुए जे दी जण लोक आसिले बाय चांस मिसिले आउ ताको आमे मैरिज नबा. नो, these are things which have stable bondings, stable bond रही परिबो. तो सेया से कहबा को चाहू थिले के सुप्रीम कोर्ट से कहले एमिति नुए जे anyone can go for a relationship temporary नुए. They are prepared to have a marriage like relationship. The moment we said homosexuality is no longer an offense under Section 377 of the Indian Penal Code, we necessarily contemplated that there could be a stable marriage-like relationship between two. से कहले जेतबेले 377 आमे डिक्रिमिनलाइज कले आमे एक्सेप्ट कले केमती हेई परिबो. आमे कंटेम्पलेट कले माने मनन कले, भाबिले, चिंतन कले, म्यूल कले, पॉन्डर कले कि मैरिज लाइक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करि पारे बिटवीन टू consenting individuals, between two persons who do not treat this as chance encounter but as something more than that. Chance and by chance नुए, more than that सबने treat करूचंती. That for them it is not just a physical relationship but something like a stable emotional relationship.
it has more an emotional component to it rather than a physical component. एमतिया नहीं जे से माने intercourse की sex करिबा पाई they want a marriage. It is obviously काहे कि ना बुझी पारुछ तो CGI कोन कहउछन्ती बुझी पारुछ ना बुझी पारुना होपफुली तुम बुझी पारुतबो बहुत बड़ कथा कहउछन्ती CGI से कहउछन्ती गोटे मेल गोटे फीमेल मैरी करूचंती मैरिज करूचंती एंड लेट अस से गोटे मेल आउ मेल मैरिज करूचंती बा फीमेल आउ फीमेल मैरिज करूचंती डिफरेंस कोन टिके बुझ देखो गोटे इम्प्लिसिट कंटेंट अछि एथरे सी कहउचंती गोटे मेल आउ फीमेल जेतबळे मैरिज करूचंती फिजिकल रिलेशनशिप दुईटा करे ओबियस थाई पारे फिजिकल रिलेशनशिप बा द टेम्पटेशन ऑफ सेक्स हैविंग सेक्स और इंटरकोर्स दुईटा करे इनबिल्ट थाई पारे बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बुझुता मुझा कहूची सुनुता टिके केयरफुली मेन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम गोटे मेल फीमेल रो रिलेशनशिप रे सेक्स डोमिनेट करि पारे नंबर 1 आउ नंबर 2 एइतरे चिल्ड्रेन भी गोटे एमतिया कांसेप्ट हे पारे चाइल्ड बा चिल्ड्रेन को पाई तमे मैरिज करि पारो देखि जे हमें आगुरु बहुत एमती इंस्टेंसेस इंडिया रे एमती बहुत प्रचलन अछि फर्स्ट वाइफ टू पुओ नाही जियो खाली होउचंती आउ गोटे मैरिज फर्स्ट वाइफ फॉर सम ये फर्टिलिटी नहीं से बैरन चाइल्ड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी नहीं ताले भी मैरिज ता माने ओनली जिंस कोन सीजीआई कहउचंती गोटे मेल आउ फीमेल मैरिज रे कॉन्स्ट्रेंट्स अधिका अछि देयर आर चांसेस कि मैरिज रे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करि पारे बट नाउ कंसीडर द केस ऑफ मेल मेल एंड फीमेल फीमेल मेल मेल आउ फीमेल फीमेल रो रिलेशनशिप एटी चाइल्ड तो बियर करि परिबेनी हाँ गोटे जिंस हैला सेक्स सेक्स दुईटा कर बा इंटरकोर्स दुईटा करे कॉमन रहिला ठीक अछि सेक्स बा इंटरकोर्स दुईटा का जगह रे कॉमन रहिला बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अंडरस्टैंड इट दिस वे जदि सेही पार्ट को दुई जन जाकरू नॉलिफाई कर दबा कैंसल आउट कर दबा इमोशनली स्टेबल रिलेशनशिप कोठी मेल मेल की फीमेल फीमेल काहे कि ना एमाने रिलेशनशिप रे तळे रहिले तांकर अन्य कोनोसी आउ ऑप्शन नाही से माने चिल्ड्रन बियर करि परिबेनी सोसाइटल स्टेटस नाही से माने आमे तो इधर को क्रिमिनलाइज करि तांते बा डिक्रिमिनलाइज करि तांते इधर आमे कहबा मेल मेल रिलेशनशिप गोटे क्रिमिनल एक्टिविटी बा सिमिलरली आमे कहबा फीमेल फीमेल रिलेशनशिप गोटे क्रिमिनल एक्टिविटी बट वंस वी सेड दैट एक्जेक्टली सीजीआई से या कहउचंती कि जेतबळे आमे तांको 2018 रे डिक्रिमिनलाइज कले आमे कहले मेल मेल रो रिलेशनशिप बा फीमेल फीमेल रो रिलेशनशिप क्रिमिनल एक्टिविटी नुए एंड ता परे भी ता सत्ते भी in spite of that despite that they chose to remain under the same roof से माने संगरे रहिले it shows से माने गोटे stable marriage like relationship seek करूचंती which is not biased by any other external parameters like जोटा बे कहली children and others तो सेति पई से कहउचंती स्टेबिलिटी हायर को केस रे स्टेबिलिटी हायर मेल मेल फीमेल फीमेल ऑब्वियसली ना ट्रू कथा पूरा तो से सेया कहउचंती that do not treat this as chance encounters but as something more than that chance encounters नुए that for them it is not just a physical relationship तांको पई एटा केवल गोटे फिजिकल रिलेशनशिप नुए बट समथिंग लाइक अ स्टेबल इमोशनल रिलेशनशिप बुझी पालो ना डीवाई चंद्रचूड़ कोन कहउचंती सीजीआई बहुत बढ़िया कथा कहउचंती Chief Justice Chandrachud observed during the third day of the Constitution bench hearing of petition seeking legal recognition of same-sex marriages. The government had argued in an affidavit that the court had only
decriminalized sexual intercourse between same-sex person in its 2018 judgment in the Navtej Singh Johar case and not legitimize this conduct. एटा का रेस्पॉन्स रे से कहले एटा ता रेस्पॉन्स रे कहले कि कोर्ट डिक्रिमिनलाइज करिछि लेजिटिमाइज करिनी डिक्रिमिनलाइज करिछि माने ठीक अछि तमरो ए एक्टा क्रिमिनल एक्टिविटी नुहे किंतु दैट डजंट मीन कि एटा गोटे लीगल वैलिडिटी पाइला बा को गोटे लीगल सैंक्टिटी मिलला त माने मैरिज तमे करबा पई याकू एक्सप्लेन करबा पई डीवाई चंद्रचूड़ जाई कि कहिसंती कि आमे स्पेशल मैरिज एक्ट आनिले कोन पई काहे कि ना पर्सनल लॉस सफिशिएंट नथिला नंबर 1 आउ कोन पई आनिले आउ एइति पई आनिले कि से माने मोर स्टेबल रिलेशनशिप चाहउछंती तांकर पैरामीटर्स फिक्स्ड स्टेबिलिटी इमोशनल स्टेबिलिटी सेति पई से वर्ड टाको बहुत केयरफुली चूज कले से कहले इधर मैरिज नॉले मैरिज लाइक रिलेशनशिप काहे कि ना मैरिज गोटे दुई जण कोन पई करंती इमोशनल स्टेबिलिटी पई पार्टनर्स पई पिला बेले जोटी डियाडी कले किछि असुविधा नहीं बुढ़ा बेले तो बुढ़ी आनी की चा दब आउ बुढ़ाई आनी की औषध दब तो सेति पई से कहले स्टेबल रिलेशनशिप पई मैरिज लाइक रिलेशनशिप सेति पई मैरिज करा जाय आउ सेटार बेसी जस्टिफिकेशन अछि सेम सेक्स रे रादर देन ऑपोजिट सेक्स रे द कोर्ट while decriminalizing homosexuality had never accepted same sex marriage center कहला से माने सेम सेक्स मैरिज को केबे भी एक्सेप्ट कर से माने डिक्रिमिनलाइज करछथि as part of the fundamental right to life and dignity under article 21 of the constitution से को जने article 21 of the constitution रे से कोन कले से डिग्निटी आ लाइफ को से प्रोटेक्ट कले किनु मैरिज कथा से तो केबे कहि नांती petitioner आर रेस्पॉन्स रे सुप्रीम कोर्ट सही कथा कहले the petitioner have sought a broader interpretation of the special marriage act of 1954 by making it gender neutral and read the term spouses into the heterosexual uses of men and women in the law a part ta bi tikke bujibo this is also very important sir jodi lgbtq use number रे थांते तो गवर्नमेंट बोर्ड पाई ए लॉ तो पास कर देता हां बिल्कुल कर देता सुप्रीम कोर्ट रो कंटेंशन कोन सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट रो कंटेंशन कोन गवर्नमेंट कहूची आपण राइट बॉडी नुहंती सुप्रीम कोर्ट कहूची केमिति पर्सनल लॉज ऊपर तमे जस्टिफिकेशन दोनु पर्सनल लॉज रिलीजियन ऊपर तमे राइट बॉडी स्पेशल मैरिज एक्ट तो एथि पई करा जायतिला आ तापरे सुप्रीम कोर्ट रो काली स्टेटमेंट ऊपर बहुत फ्यूरर भी हेची सुप्रीम कोर्ट कहिसंती कि आमे कॉन्स्टिट्यूशन जेतबेले तयारी हेतिला सेतबेले से माने कोन भाबुतिले दैट इज नॉट इंपोर्टेंट 69 इयर्स रे इवॉल्व करिछि आजिरो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोन सोसाइटी इज चेंजिंग सोसाइटी इज इवॉल्विंग सो आजिरो इंटरप्रिटेशन मायने रखुछि आर यू गेटिंग माय पॉइंट अरे एबे समंती हार्ट फाट बोधे उडी उडी आछछि नै हार्ट फाट एमती देई होउछि बोधे नुआ नुआ आछि वाह बढ़िया तो एक्सीलेंट आउ बाईपास सर्जरी दरकार नहीं एटू दि चारटा नहीं जिवा वेरी गुड तल से या कहले मो कथरा बुझी पड़छ से कहले पिटिशनर सीक करिसेंती कि तार ब्रॉडर कोन हबो ब्रॉडर टर्म रे ताको हमें इंटरप्रेट करिबा एडी दुईटा टर्म पुनी इंपोर्टेंट गोटे टर्म होची स्पाउस आ गोटे टर्म होची मैन वुमेन तो गवर्नमेंट कोन कहूची जोटी स्पाउस अच्छी सेटा जेंडर न्यूट्रल the petitioner has sought a broader interpretation of the special marriage by making it gender neutral and read the term spouses into the heterosexual uses of man and women in the law जदि आमर वर्ड मैन आउ women biological man आउ women
धरिले हम ना उड़िला आर्ट क्या देवे धरिले जहाँ कहले दे हम धरवा पड़ो ना हाँ से कहते बायोलॉजिकल मैन आउ वुमेन कथा से कहते बायोलॉजिकल मैन आ वुमेन जो रीड कराउची कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशनर्स कौन कहते पिटिशनर कहते मैन और वुमेन को चेंज करके वार्डटा स्पाउस कर दियो कहीं स्पाउस होची जेंडर न्यूट्रल सेंटर कौन कहूची सेंटर कहूची जेहेतु ए लॉ रे ओरिजिनल लॉ रे मैन और वुमेन अछि ए माने केबे भी सेम सेक्स को मीन करि परिबेनी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सेड Parliament's intention behind introducing the 1954 Act was to open up an avenue for people who are not falling back or relying on the dictates of their respective personal laws to get married. एबे जोटा तुमको कहूली से कहले एटा ओपन अप ही काहे करा गला एटा ओपन अप एथि पई करा गला ओपन अप कोन पई करा गला ना ना के सेंड करूची जणा पडुनी माने मु निज को निज भी सेंड कर देबे एडा को मु करूची देखो एडा को मु करूची मु निजे को निजे भी सेंड कर परिबी सेति जदी टाइम पास करिवार थिबो मु निजे को निजे भी सेंड कर परिबी जेम देबे 100 पठौची मु ए 100 उडा मु पठौची ठीक अछि तो सेमते भी करि हबो ना आउ पठौनी एडा को अन्य माने पठौचंती मु दीटा पठैछि तो से सेया कहउचंती कि जो माने सेई आर्किया क्लॉज रु बाहर को बाहरिबा को चाहुचंती आर्किया क्लॉज रु बाहर को सेमान को पाई तो 1954 आ तापरे जदी सही लॉज स्पेशल मैरिज एक्ट दरकार काहे की देला स्पेशल मैरिज एक्ट दरकार हैला काहे की ना रिलीजियस लॉज टू बाहर को से माने जिबा को चाहुचंती जदी एबे स्पेशल मैरिज एक्ट को भी तमे अधीन करिबो कहबो हिंदू धर्म रे एटा नथिला इस्लाम रे एटा नथिला ताल तो काम ओवर ना ताले काम ओवर से सया कहबा को चाहुचती करेक्ट for falling we are not falling back or relying on the dictates of their respective personal laws to get married. Justice A.S. Ravindra Bhatt described the 1954 Act as an all enfolding legislation. S.R. Bhatt convincing way re कहचंदी खाली described the 1954 as all enfolding legislation. There was also a factor of addressing endogamy which we cannot ignore, Justice Bhatt said. Justice Bhatt खाली बढ़िया कथा कहले से कहले एई एक्ट अंडर रे एंडोगामी भी आसुची एंडोगामी माने कोन बुझ परछो तो एंडोगामी माने मैरिज विदिन कोन मैरिज विदिन निज ग्रुप बा निज ट्राइब इन मैरिज जोटा इंटर मैरिज जोटा निज ट्राइब बा निजर ग्रुप रे सेटा भी दउनी माने धर गोत्र सेम हे गला ये हे गला भाई भौणी मैरिज कजन को मैरिज सेटा भी तो तमरो रिलीजियस लॉज दउनी ना तो सेटा को करबा को तमे कोन करबो सेटा को करबा को भी तमे स्पेशल मैरिज एक्ट को जाक पड़िबो से कहले एमितिया जिंस को एटा तो अछि आ होउची तो ताको भी तमे इग्नोर करि परिबो नाही. In the last 69 years our law has evolved to recognize the fact we not just one of relationship एबाने गोटे वन टाइम रिलेशनशिप नुचंदी आउटस्टेबल रिलेशनशिप. Therefore by decriminalizing homosexuality we have not just recognized fleeting relationships between consenting adults of the same gender. हमें decriminalize कले हमें same gender रो consenting adults को forcefully ले हबनी. We have also recognized implicitly the fact that people who are of the same sex would be in stable relationship. ए पार्ट को बुझिबो जो पार्ट को तुमको बुझेली से कहउचंदी नॉट ओनली हमें डिक्रिमिनलाइज कले हमें एया भी कहउचे कि से माने मोर स्टेबल रिलेशनशिप रे रहबे बा से माने स्टेबल रिलेशनशिप चाहुचंदी who are of the same sex would be in a stable relationship. Chief Justice Chandrachud said. Justice Bhatt indicate कि concept of marriage was not cast in stone. Justice Bhatt कहउचंदी ए जो मैरिज रो कांसेप्ट कहउछ एडा कोन पत्थर रो लकीर रही जाई छि कि एटा कोन गो
एटा कोन स्टोन रे कास्ट है कि पत्थर रे लकी रही कि क्या को चेंज करी हबनी मोल्ड करी हबनी द कोर्ट्स रिमार्क सर्व एज अ काउंटर टू द आर्गुमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एटा काउंटर करिबो आर्गुमेंट ऑफ द गवर्नमेंट that the existing concept of marriage as a heterosexual institution has the sanctity of law and religion से कहउचंती बढिया कथा कहले से कहले कोन कोर्ट्स रिमार्क serve as a counter to the argument of the government कोर्ट रो रिमार्क ता काउंटर हैला कार गवर्नमेंट रो रिमार्क कि जदी हेटेरोसेक्सुअल हैला कांसेप्ट ऑफ मैरिज हेटेरोसेक्सुअल हैला ताहाले ही ताको लॉ आउ रिलीजन रो सैंक्टिटी मिलिबो तो सुप्रीम कोर्ट कर दावा कोन कि रिलीजन कथा तो तमे न पकेले ही भलो डोंट टॉक अबाउट रिलीजन एट ऑल काइना रिलीजन रो परव्यू रे से माने आसु नाहंती बोली तो हमकु गोटे नुवा लॉ दरकार पड़ला नंबर 1 सैंक्टिटी ऑफ लॉ दैट वी विल बी जस्टिफाई कि अच्छी कि नहीं सो रीड इट अदरवाइज द सेंटर हैज वांट दैट लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज वुड सीरियसली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एवरी सिटीजन से कहले सेंटर कहला कि सेम सेक्स मैरिज रो तमे जदी ये करिवो सीरियस रिपरकशंस रहिबो द कांसेप्ट ऑफ मैरिज ट्रांसेंड कंटेम्पररी अंडरस्टैंडिंग यूज्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस मैरिज प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क and the framework is evolving and just not just cast in stone just is what observed tale eitar reply re just is what कहले से कहले रिपरकशन हबो से कहले कांसेप्ट ऑफ मैरिज जोटा अछि सेटा ट्रांसेंड करूची ऊपर को उठुची कंटेम्पररी अंडरस्टैंडिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस रे कॉन्स्टिट्यूशन रे जेमिति मैन वुमेन करथले से टाइम पाइन ठीक थिला मैरिज गोटे फ्रेमवर्क प्रोवाइड करूची आ ए फ्रेमवर्क ही इवॉल्व करूची सेहिति पई मैरिज किछि गोटे स्टोन रे कास्ट हेनी पत्थर की लकी रेनी कि 69 इयर्स तळे मैरिज रो कांसेप्ट जा थिला आज भी हबो अरे केस इन पॉइंट होची लिव इन रिलेशनशिप आगरु लिव इन रिलेशनशिप केही कहू नथले एबे कहउछथि इंटर रिलीजियन मैरिज तो ओवर अ टाइम सबु जिंस रे जदी लॉ इवॉल्व करूची ताले जोहार निजर सेक्सुअलिटी को नै कि किछि कंट्रोल नै व्हाई नॉट इन दैट केस एया हैला पॉइंट However, the court said it has to examine whether it was making policy choices which was for the legislature to make and whether it was doing something fundamentally contrary to the scheme of the 1954 Act. ताले कोर्ट किंतु एया भी कहले ए पार्ट इंपोर्टेंट कोर्ट किंतु एया भी कहले कि हमें एग्जामिन करूछु कि हमें जो पॉलिसी चॉइसेस करूछु सेटा लेजिस्लेचर करिवो ना हमें करिवो आ जदी हमें करूछु हमें 1954 एक्ट रे जहा थिला स्पेसिफाइड सेया करूछु ना तार ऑपोजिट रे किछि जिंस करूछु माने बेसिक प्रीमाइसेस को हमें इंटैक्ट रखुछु बा बेसिक आइडियोलॉजी को इंटैक्ट रखुछु ना ताकू चेंज करूछु सब पिला माने ए पॉइंट गुडा को हमें नबा काहे ना इंपोर्टेंट पॉइंट तमे जानिछ आडा 24/7 ओडिया सबुड बढ़िया सदा बेले तम सागरे थिबो जेतळे जाय तमे एग्जाम क्लियर करिना पिला माने सदा बेले मने रखिबो इंस्पिरेशन एग्जिस्ट करूची बट इट मस्ट आज द थॉट ऑफ द डे बट इट मस्ट फाइंड यू वर्किंग इंस्पिरेशन एग्जिस्ट करूची चांस आसीबो लक आसीबो किंतु सेत बेले तुमको मेहनत करूतिबा दरकार सेत बेले तुमको हार्ड वर्क करूतिबा दरकार जदी तमे सेत बेले मेहनत करिलनी हार्ड वर्क करलनी ताले किछि आसीबो नाही ताले जेत बेले अपॉर्चुनिटी न करूतिबो से जदी देखिबो तमे सोइछ देन काम ओवर सकाळ 8:10 रे पिला माने सबुदिन हिंदू एनालिसिस रो क्लास रहिबो आउ संध्या 6 रे बुधवार गुरुवार शुक्रवार आज भी संध्या 6 रे पीओ आउ जे रो इंग्लिश क्वेश्चंस हमें डिस्कस करिबा पिला माने ईद पई बहुत सारा ऑफर चली छी Y292 कोड यूज करिबो 17% ऑफ डबल वैलिडिटी महापैक आउ टेस्ट पैक्स रे सुपरस्टार बैच को भी तमे नहीं पारिबो 550 500 रो कांसेप्ट रो बैच 5 थर कले बुझिबो 50 थर कले कॉन्फिडेंस 5 थर कले एग्जाम क्लियर हबो एबे भी अवेलेबल तमरो 964 रुपीस रे ओनली नाउन्स रो क्लास सरी छी प्रोनाउन रो हमें आरंभ करिबा नेक्स्ट क्लास रो ईद पई पिला माने ऑल टाइम लोएस्ट प्राइसेस अछि पीओ आउ जे बैच ओनली 9999 कहै छी 964 रे अवेलेबल कोड यूज कला परे जूनियर टीचर करो सबु बैच 1349 रे अवेलेबल ओडिसा बीएड रो बैच भी 1450 रे अवेलेबल सो आज ही किनिबो जो भी बैच तमे किनिबा को चाहू सेलिब्रेट करिबा सक्सेस ईद को ईद मुबारक पिला माने आउ ऑब्वियसली
हमरो ऐप रे बहुत सारा फीचर्स अछि प्रीमियम स्टडी मटेरियल करंट अफेयर्स जॉब अलर्ट सब्जेक्ट वाइज क्विजेस डेली क्विजेस मैगजीन्स पावर कैप्सूल्स वीडियोस नोट्स ऑफ आर्टिकल्स जदी देखिनो ताले इमीडिएटली एबे ही सब्सक्राइब करो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग फॉलो मी एट ADA 24/7 स्टे कनेक्टेड विथ इंडियाज मोस्ट पॉपुलर टेस्ट prep platform stay focused and motivated let's simplify competitive preparation use code Y292 for flat 17% discount plus additional 1% discount if you use the coins provided in the app download the app today don't forget to like comment share and subscribe pila mane ame kali again another round of interesting news development a case bhi ame track kariba plus ame nuwa editorial article bhi naba so all the very best god bless you all eid mubarak once again to all of you bye bye keep studying hard bye bye